Hello guys, welcome to the course of operating system. Today we are going to discuss about the operating system services categories. How the operating system services are categorized, that we are going to discuss. Before this video, what we have discussed guys, that about the operating system approaches, views or maybe the perspective. How operating system looks like to the users and to the systems. So here there is the operating system services are, we can say the operating system services are also called as operating system components or maybe the functions sometimes, but is the name is changed, but the nature of the services are same. Okay, so let's start with the definition of services guys. Before discussing the service categories, let's start with the service definition. So what do you mean by services in general terms, real-time examples? What is service? A system or and let's say organization that provides to the public with something that it needs. मतलब सिस्टम और ऑर्गेनाइजेशन एक ऐसी कुछ सर्विसेज प्रोवाइड करती है जिसके कस्टमर्स को या पब्लिक को जो कि उसको रिक्वायर होती है, और इट्स वी कैन से द जॉब दैट एन ऑर्गेनाइजेशन डज, मतलब एक ऑर्गेनाइजेशन कहीं ना कहीं वो काम करती है, दैट इज व्हाट द सर्विस. अपार्ट फ्रॉम दिस, हम क्या बोल सकते हैं कि नाउ सर्विसेज कैन सेटिस्फाई द यूजर एंड सिस्टम रिक्वायरमेंट्स. ओके, देन the services will available as per the request or maybe the automatically. मतलब क्या कि एक आधी पब्लिक एक आधी क्लाइंट ने किसी सिस्टम को अगर सर्विस की रिक्वायरमेंट की है तो उस सर्विस को सेटिस्फेक्शन होता है, या ऑन द रेगुलर बेसिस द सर्विसेज आर गोइंग टू बी प्रोवाइडेड टू दैट पर्टिकुलर what we can say the public or let's say the client. Now for example, let's say there are mobile services are available, postal services are available, LIC services, market calls, mobile quality services, and many more services are available nowadays. Totally every satisfaction of the user is depend upon what the service, how that vendors is going to be provided the service. So here also in operating system, if operating system provide the services in such a manner so that the users and their programs can satisfy, then only that operating system will be the best operating system, we can say. So let's start with the the operating system services guys. So here in this cartoon or diagram you can see that lots of services are provided. Any users, any clients are getting, many clients are getting the services from their vendors respectively. Here, as we know, the operating system is the service provider in the computer system. We have discussed about the computer system, which is what the collection of the what we can say the components, software components and hardware components. In that particular computer system, operating system plays a role as what the service provider, plays the role as what the service provider. To keyword to carry forward that keywords, what we have, the operating system provide the services that are usually categorized into two types: the users services, to user services, and to the system perspective services, or we can say the user services or maybe the program services. Okay, or the OS satisfy the users and system both, hence OS is also called as all in all. तो इसके पहले हमने जो वीडियो देखा था उसमें सारी डेफिनेशन देखी थी ऑपरेटिंग सिस्टम की. वहां पर हमने कहा था कि ऑपरेटिंग सिस्टम रिसोर्स मैनेजर है, मदर टू स्मॉल किड है, गवर्नमेंट लाइक स्ट्रक्चर है, whatever. Okay, so on this perspective we can say the operating system is all in all perspective. Why can say हम सर्वे सर्वा बोल सकते हैं उस ऑपरेटिंग सिस्टम को. तो मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम सभी एंड को सेटिस्फाई करती है. नाउ ऑन द बेसिस ऑफ दैट, ऑपरेटिंग सिस्टम सर्विसेज मे वेरी फ्रॉम सिस्टम टू सिस्टम. मतलब हर किसी सिस्टम के लिए कभी ना कभी सर्विसेज वेरी हो सकती है एज पर देयर कॉन्फ़िगरेशन, एज पर देयर वेंडर कॉन्फ़िगरेशंस गाइस. ओके, सो सर्विसेज की अगर डेफिनेशन देखें तो कस्टमर फीडबैक, सपोर्ट, इनोवेटिव, क्वालिटी, एक्सेलेंट एंड फ्रेंडली, ये सारे के सारे कहीं ना कहीं सर्विसेज के इसमें इन्वॉल्व होते हैं. So let's talk about what is the operating system categories. But before discussing the categories, what are the purposes of the service operating system services? So that need to be discussed. Number one, it provides user that service run various program in convenient manner. Operating system यूजर्स को उनके प्रोग्राम्स को रन करने के लिए कन्वीनियंट मैनर प्रोवाइड करती है. फॉर दैट पर्पज द सर्विसेज आर कैटेगराइज. सेकंड वन, ऑपरेटिंग सिस्टम सर्विस आर रिस्पांसिबल फॉर मैनेजमेंट ऑफ प्लेटफॉर्म रिसोर्स. जितने सारे रिसोर्सेज उनके पास अवेलेबल है उनको मैनेज करने के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम को सर्विसेज प्रोवाइड करती है, इंक्लूडिंग द प्रोसेसर, मेमोरीज, फाइल, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. Okay, so in order to handle all these devices carefully, fair manner, the operating system provide the services. Apart from this, they generally shield applications. Applications को कहीं ना कहीं कवर प्रोवाइड करता है from the implementation detail of the machine. मतलब irrespective of the implementation detail क्या है, वो application को उतना बर्डन ना देते हुए सभी उनको प्रोटेक्ट करने का काम करते हैं. For this purpose, guys, operating system provided some services, and that services are categorized into two types or two categories. Very first is what? Users perspective. Very first is what? The users perspective services. Okay, and what involved in users perspective services, guys? Let's start with the first one, program execution. Whatever the program the user written by the with the help of any programming language, that is going to be executed over here.
डिटेल्स में उसके नेक्स्ट वीडियो हम डिटेल में जाने वाले हैं, द सर्विसेज ऑफ द यूजर्स पर्सपेक्टिव. Second will be input output operation. While the execution of any program, input output is required, hard disk is required. That time, input output operations are going to be handled by the operating system itself. Apart from उसके बाद फाइल सिस्टम मैनिपुलेशन, फाइल सिस्टम के सारे रिलेटेड जो टास्क है वो सभी के सभी कहीं ना कहीं यहाँ पर प्रोवाइड किए जाते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम में. उसके बाद है प्रोसेस कम्युनिकेशन. दो प्रोसेस के बीच में अगर कम्युनिकेशन करना है एक सिस्टम के ऊपर या दूसरी सिस्टम के ऊपर है, उस समय पे भी प्रोसेस कम्युनिकेशन होना चाहिए. उस समय पे भी ऑपरेटिंग सिस्टम हमें कहीं ना कहीं हेल्प करती है. दैट इज प्रोसेस कम्युनिकेशन. यूजर इंटरफेस, यूजर को अच्छा दिखने के लिए, यूजर को प्रोग्राम के साथ डील करने के लिए, हार्डवेयर के साथ डील करने के लिए व्हाट वी हैव यूजर इंटरफेस. यहाँ पर 3 टाइप के इंटरफेस हम पढ़ने वाले हैं. उसके बाद हमारे पास है एरर डिटेक्शन. एरर कभी कभी ऑपरेटिंग सिस्टम में कुछ प्रोग्राम्स एग्जीक्यूट होते हैं तो उस समय पे हो सकता है कि कुछ एरर्स आए, तो उसमें डिटेक्शन का काम जो है वो भी ऑपरेटिंग सिस्टम की यूजर्स पर्सपेक्टिव के हिसाब से सर्विस प्रोवाइड की जाती है. सेकंड कैटेगरी हमारे पास है सिस्टम पर्सपेक्टिव सर्विसेज, और वी कैन सी द प्रोग्राम्स पर्सपेक्टिव. मतलब क्या, यूजर्स को सेटिस्फाई करने के लिए जो सिस्टम में प्रोग्राम्स है उनके पर्सपेक्टिव हिसाब से, मतलब यूजर सिस्टम के लिए क्या सर्विसेज प्रोवाइड करती है. नंबर 1 है रिसोर्स एलोकेटर. ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर बर्डन ना आने के लिए परफेक्टली रिसोर्स का एलोकेशन होना चाहिए, ये भी सिस्टम केयर करती है और उसको रिसोर्स एलोकेशन नाम दिया गया है. उसके बाद है अकाउंटिंग. सभी रिसोर्सेज का अलॉटमेंट, यूजर्स लॉगिन, ऑल द डिटेल्स आर गोइंग टू बी अकाउंटेड so that the decision can be taken and the decision can be conveyed to the others. That accounting is also available. Apart from this, protection is available from the unauthorized users, authentication, authorizations. All the things are available over here. So these are the things are categorized. These the things are categorized. The operating system services are categorized. यहाँ पर हमने ऑपरेटिंग सिस्टम के 2 कैटेगरीज देखी है. पहली कैटेगरी के ऑपरेटिंग सिस्टम यूजर्स को क्या क्या सर्विस प्रोवाइड करती है, यहाँ पर मैंने लिस्ट लिखी है. इसके तुरंत बाद जो हम वीडियो बनाने वाले हैं उसमें सभी सर्विसेज को डिटेल में देखने वाले हैं. सबसे पहला जो वीडियो रहेगा इसके बाद तो यूजर्स पर्सपेक्टिव सर्विसेज को एक्सप्लेन करने वाला होगा, और उसके बाद को जो वीडियो रहने वाला है वो सिस्टम पर्सपेक्टिव के सर्विसेज को डील करने वाला होगा. तो यहाँ पर आई गेस कि आपको ये समझा होगा कि कैसे कैसे ऑपरेटिंग सिस्टम की सर्विसेज कैटेगराइज हुई है और सर्विसेज एक्चुअली क्या है. मतलब क्या कि सर्विसेज जो है कि ऑपरेटिंग सिस्टम खुद यूजर्स को उनके प्रोग्राम्स को देती है. दैट आर व्हाट द सर्विसेज. थैंक यू सो मच गाइस. नेक्स्ट वीडियो हम उसके डिटेल सर्वे का डिटेल डिस्कशन करेंगे यूजर्स पर्सपेक्टिव का.